Hello and welcome to my YouTube channel. Today we're gonna discuss that whenever a Microsoft Explorer is open, it automatically open in the Microsoft Edge. So what we have to do to avoid this, or how can we open a website in Microsoft Explorer instead of Microsoft Edge. So here I will show you something. First of all, kindly subscribe to my channel. And now I open the Microsoft Explorer. It opens in the Microsoft Edge. So what we have to do now is we have to make some amendments in the settings. We have to change some settings. We will go to the three dots drop down menu, and then we will go to the settings. आपने setting press करना है, and from settings if you look at the left side, आपको default browser मिलेगा. Go to the default browser, and then I will let you know. Here it is. Allow sites to be reloaded in an Internet Explorer mode. Okay, यहाँ पे not don't allow है. So what we have to do is we have to click on it on the drop down menu, and we have to select allow. So allow को press कर दिया. उसके बाद what we have to do, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें. एज को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू रीस्टार्ट द एज टू मेक द सेटिंग्स इफेक्ट. देन हमने जो वेबसाइट ओपन करनी है, वट एवर लिंक वी वांट टू ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, वी हैव टू पेस्ट इट हेयर. सो यू प्रेस ऑन द ऐड बटन, उसको ऐड करें. फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने ओरेकल का एड्रेस जो है वो कॉपी किया. I will copy this address, and then I will go here, and on add page I will paste it, then I will press add. ठीक है जी, ये मेरा Oracle का एड्रेस ऐड हो गया. Now what we have to do, हमें रीस्टार्ट प्रेस करना पड़ेगा ताकि एज जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, और ताकि सेटिंग्स जो हैं वो अपना काम करना शुरू कर दें. So I pressed restart. Let's see. Edge will close and open again. So you can see here address is added, and added on which date and will expire on which date. Normally it works for the 30 days. 30 दिन के लिए ये आपकी वेबसाइट काम करती है. Now मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहा हूँ, वैसे ही एज में ओपन होगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. आप ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखें यू आर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, most pages work better in Microsoft Edge. ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ही ओपन हुआ है. मैं ओरेकल को ठीक है लॉगिन कर लेता हूँ और देखते हैं ओरेकल मेरा काम करता है कि नहीं करता. आई विल स्टार्ट माई ओरेकल एप्लीकेशन. लेट्स सी, बिकॉज ओरेकल वर्क्स इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. आई विल सी will it work in the Edge in Microsoft mode or not. So here it is, it opens. So आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर काम कर रहा है. सिंपल सी सेटिंग्स थी, कोई बड़ी सेटिंग्स नहीं थी, और इंशाल्लाह यू कैन डू इट.